आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे बात करें, जैसे कि सीनियर सिटीजन्स का मेंटेनेंस एंड वेलफेयर, पेरेंट्स का मेंटेनेंस एंड वेलफेयर। इसके लिए अपने कंट्री में एक्ट 2007 में बनाया गया। नेम इज़ द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स, इसमें पेरेंट्स के लिए सीनियर सिटीजन होना ज़रूरी नहीं है। इस एक्ट 2007 में बनने के पहले भी प्रोविज़न हमारे पास अन्य लॉज में थे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 41 ले लीजिए, विच सेज दैट राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस, बट इन वेरी brief words it was mentioned that the state shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provisions for securing the right to work, to education, to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want. So this Article 41 of Constitution provides, in brief, the responsibility of state to take care of persons of old age. Apart from this, Chapter 9 of Criminal Procedure Code, wherein Section 125, 126, 127, 128 deals with Section 125, which is commonly known as a application made by a woman for maintenance from her husband. But Section 125, subsection D, clearly mentions that if any person having sufficient means neglects or refuses to maintain, subsection D says his father or mother unable to maintain himself or herself. So, Chapter 9 of CRPC also deals with the provision. Apart from this, Hindu Adoption and Maintenance Act, Section 20, 21, 22 also talks about this. Section 20 says maintenance of children and aged parents, obligation to maintain unmarried daughters. Section 21 defines dependents. Section 22 talks about maintenance of dependents. Now we have in our hand the act which is meant for the specific purpose of maintaining the welfare of parents and senior citizens. Act is of 2007. Under Section 32 of the Act, the state government has been empowered to make rules, and accordingly the Uttar Pradesh government has made rules in the year 2014. The purpose of the act, which means what were the circumstances, or what are the circumstances which necessitated the enactment of this kind of law. This is given in the introduction of the act. It says that India grows at a rapid pace. Its senior citizens bear the brunt of changing socio-cultural scenario. Many face isolation and lack the resources for a better quality of life. Currently, 11% of India's elderly are living alone or with non-relatives. By 2025, about 25% of those above 60 years and 40% of those above 75 years would be living alone. Such a massive and grave scenario is there. This act says that the adult children and grandchildren who are earning members are required to maintain and take care of their parents or grandparents. Maintenance means proper food, clothing, housing, and medical treatment.
This act also has a built-in provision for punishment for those who do not pay and those who abandon parents. They can face imprisonment also. This act requires a senior citizen or the parent to make an application before the tribunal, and tribunal means the sub-divisional officer. The application has to be disposed of within 6 months by the tribunal, and before that an efforts of conciliation may also be had. This act also provides for setting up old age homes for providing maintenance to the indigent older persons. The condition. So under this act, the parents are senior citizens. They have an option. The tribunal may take suo motu also, cognizance of the condition of an indigent senior citizen, or else the senior citizen or parents may move an application. The definition of children says that son, daughter, grandson, granddaughter, definitely not a minor. Maintenance includes provision for food, clothing, residence, and medical attendance and treatment. I am reading definition just because who are entitled to seek relief under this act, who are bound by the act to provide maintenance, and what the maintenance includes. Now, the entitlement of parents means father, mother, whether biological, adoptive, or stepfather or stepmother. This act includes a stepfather and stepmother also. And whether or not the father or the mother is a senior citizen. Relatives means any legal heir of the childless senior citizen. यानी ऐसा सीनियर सिटीजन जिसके कोई बच्चे नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है, उनका कोई लीगल एयर जो माइनर तो नहीं है मगर उसके पास पोजीशन में है और जिसने इनहेरिट की है प्रॉपर्टी उस सीनियर सिटीजन से, या इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टी उस सीनियर सिटीजन से, अंडर सच कंडीशन टू मेंटेन हिम. अच्छा, सीनियर सिटीजन definitely above 60 years of age. Now the good thing is that earlier we have seen that whenever act applicability was mentioned in the clause, it was uttered that except in the state of Jammu and Kashmir. But now this Act of 2007 is applicable in whole of India, and the clause except the state of Jammu and Kashmir has been omitted in the year 2019. This Act of 2007 was adopted was implemented in Uttar Pradesh on 25th September 2012, in Uttarakhand November 2008, Bihar 2011, Jharkhand 2008, Madhya Pradesh 2008, Chhattisgarh, Rajasthan also 2008. सेक्शन 4 इस एक्ट में बताता है कि एक ऐसा सीनियर सिटीजन जो और पेरेंट जो कि अपने को स्वयं मेंटेन करने में अक्षम है, अपनी अर्निंग से, अपनी प्रॉपर्टी से जो उसके पास है, वो व्यक्ति एप्लीकेशन मूव करेगा अंडर सेक्शन 5.
बिकॉज वो भी एंटाइटल्ड है एक नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए। सेक्शन 4 में इस बात को रिपीट किया गया है कि पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं अगेंस्ट वन और मोर ऑफ हिज चिल्ड्रन, एंड एक सीनियर सिटीजन जिसके पास इश्यूज नहीं है, चिल्ड्रन नहीं है, वो अपने किसी ऐसे रिलेटिव के अगेंस्ट एप्लीकेशन मूव कर सकता है जो कि प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा या सीनियर सिटीजन की किसी प्रॉपर्टी के पोजीशन में है वो, और ऐसा व्यक्ति खुद को मेंटेन करने में या अपनी प्रॉपर्टी से, अपनी अर्निंग से अपने को असमर्थ पा रहा है। यहाँ पे एक बार फिर से बता दें कि एप्लीकेशन मूव करना सेक्शन 5 में तो ज़रूरी है, लेकिन ट्रिब्यूनल सो मोटो भी कॉग्निजेंस ले सकती है। ट्रिब्यूनल ऐसी एप्लीकेशन को तय करने में मैक्सिमम 6 मंथ्स लेगी और ऐसे चिल्ड्रन एंड रिलेटिव को डायरेक्शन दे सकती है इंटरिम मेंटेनेंस का भी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द एप्लीकेशन। कंसिलिएशन का प्रोविज़न है इसमें, विच मीन्स कि दोनों पार्टीज आपस में बैठ के सुलह समझौता कर लें और अगर एग्री कर जाते हैं तो वो कैंसिलेशन की जो रिपोर्ट तैयार होगी वो ट्रिब्यूनल के पास भेजी जाएगी और ट्रिब्यूनल उस पर अपनी मुहर लगा करके उसको कंफर्म कर देगा। दोज हु फेल टू मेक एनी पेमेंट और कंप्लाई बाय द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल कैन बी इशूड ए वारंट बाय द ट्रिब्यूनल, एंड ऑल्सो एन imprisonment is also proposed which may extend to 1 month or until payment if sooner. Jurisdiction very simple, जहाँ पे applicant रहता है और जहाँ पे उसके चिल्ड्रन या रिलेटिव रहते हैं, तो जो भी कन्वीनियंट पड़ेगा उस एप्लीकेंट के लिए, या तो जहाँ पे मोस्टली इन केसेस में ये देखा जाता है एप्लीकेंट जहाँ रह रहा है वो एप्लीकेशन वहीं पे मूव करना पसंद करेगा, उसी जिले में। अच्छा, उन रिलेटिव्स या चिल्ड्रन के लिए जो कि सर्विस अवॉइड कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्स पार्टी ट्रिब्यूनल प्रोसीड कर सकती है, ऑर्डर पास कर सकती है, या ऐसे चिल्ड्रन, ऐसे रिलेटिव जो आउटसाइड ऑफ इंडिया रह रहे हैं उनको समन इशू किया जा सकता है और उनको भी अपीयर होना पड़ेगा। एक चीज़ खास बात इसमें यह है कि इसमें एडवोकेट के थ्रू अपीयरेंस नहीं है, पार्टीज को खुद अपीयर करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये उठता है कि जहाँ पे सीनियर सिटीजन बहुत ही सीनियर है वो कैसे बार बार अपीयर करेगा। In that conditions, he can move an application to the sub-divisional officer, that is a maintenance tribunal, showing his incapacity to frequently present himself before the tribunal, and accordingly his application would be adhered to, and some arrangement would be made to facilitate him, considering his convenience. Section 7, subsection 2 says that the tribunal shall be presided by the person who is sub-divisional officer. Summary procedure will be adopted. Such tribunal will have all the powers of the civil code for the purpose of taking evidence on oath and enforcing the attendance of witnesses, and also for compelling the discovery and production of documents and material objects. One point is there, limit of amount has been fixed about maintenance, which is 10,000 rupees. Although section 10 provides alteration in allowance also. That means an application can also be moved if there is any change in the circumstances. This gives a hope that amount can be enhanced also
I would say in one of the relative provisions I just referred to, there was a limit of 5,000 which had been removed. But here 10,000 limit has been kept, considering that a senior citizen or a parent who is unable to maintain himself or senior citizen who is indigent, the rupees 10,000 would be sufficient for his maintenance. Apart from this, the state may provide for old age homes, for food, shelter, medicines, treatment, and other things. Appellate tribunal is also there, which will be presided by the district magistrate. But this appellate tribunal clearly says that any senior citizen or a parent, as the case may be, aggrieved by an order of tribunal, may within 60 days from the date of order prefer an appeal to the appellate tribunal. प्रश्न ये है, सीनियर appellate ट्रिब्यूनल पे सीनियर सिटीजन तो जा सकता है, पेरेंट भी जा सकता है. क्या ऐसा कोई प्रोविज़न है जहाँ पे रिस्पोंडेंट यानी कि चिल्ड्रन और द रिलेटिव भी अपील में जा सकते हैं ट्रिब्यूनल, वेलफेयर ट्रिब्यूनल, मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के खिलाफ? नो, इस पूरे एक्ट में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है. तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाने के लिए अपॉर्चुनिटी सिर्फ दो लोगों को दी गई है, पेरेंट्स को, सीनियर सिटीजन्स को, लेकिन उस पार्टी को नहीं जिसके अगेंस्ट ऑर्डर मेंटेनेंस का हुआ है. वो कहाँ जाएगा? प्रश्न क्या है? So where there is no provision in the act, so if a child against whom the maintenance tribunal has passed an award, or the relative against whom the maintenance tribunal has passed an order to maintain the senior citizen, may approach High Court under Article 226 of the Constitution of India, since there is no provision for them to file an appeal against the order of maintenance tribunal. I repeat, Section 17 clearly bars the appearance of a senior citizen or parents through legal practitioners. Means legal practitioners are fully barred. Old age homes, definitely for indigent persons, has to be established. Chapter 5, that is protection of life and property of senior citizen. This is a bit difficult to understand. In this chapter 5, life and property of senior citizen is protected, which means the section 21, which is in chapter 5, should talk about the protection of life and property of the senior citizen. But no, it is not such. This section talks about only publicity and casts a responsibility upon the central government and state government to publicize the provision of this act. The inference is that is at chapter 5 and section 21, although heading is there for protection of life and property, but it does not say any word about protection of life and property of the senior citizen or the procedure and what arrangements will be made. Now at this stage there is no need to get disappointed, because when the rules of Uttar Pradesh were made in 2014, section 21 and section 22, rules 21 and 22 of the rules of 2014 categorically provides that where the application would be made by the senior citizen for protection of his life and property. So, property of a senior citizen is also protected.
Section 23 is also important, where it says that any senior citizen, after the commencement of this act, has transferred by way of gift or otherwise his property, subject to the condition that the transferee, यानी जिसको गिफ्ट दे रहा है, shall provide the basic amenities and basic physical needs to the transferor. और इस कंडीशन के साथ ये गिफ्ट की गई है, मगर प्रॉपर्टी पाने के बाद वो ट्रांसफरी रिफ्यूज कर देता है और ही फेल्स टू प्रोवाइड सच एमिनिटीज and physical needs, then transfer of property shall be deemed to have been made by fraud or coercion or under influence and shall be declared void at the option of the transferor by the tribunal. Civil court is also barred. Jurisdiction of civil court is barred. State government has to make rules under section 32. Now, certain relevant provisions of rules 2014 made by the Uttar Pradesh, which is known as Uttar Pradesh Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Rules 2014. Rules also talk about action by the tribunal in case of settlement before a conciliation officer. In this rule, it has been provided that the tribunal, while passing the order and giving direction to the opposite party to pay maintenance, shall take following points into consideration. ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास, मेंटेनेंस का ऑर्डर पास करने के साथ साथ इन तीन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखेगी. ए, अमाउंट नीडेड बाय द एप्लीकेंट टू मीट हिज बेसिक नीड्स, कितनी अमाउंट की ज़रूरत है उस एप्लीकेंट को, जैसे फूड के लिए, क्लोथिंग्स के लिए, अकोमोडेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए. बी, अपोजिट पार्टी की इनकम कितनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना. सी, वैल्यू ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी इफ एनी of the applicant which the opposite party would inherit or is in possession of. उस प्रॉपर्टी की भी वैल्यू क्या है, इन बातों को कंसिडर करते हुए वो मेंटेनेंस डिसाइड करेगी. और इन केस द अपोजिट पार्टी who has been directed to make maintenance, to pay maintenance or take care of, fails to, then the tribunal will issue a warrant or may also issue order for imprisonment which may extend to 1 month or until payment is made if earlier. Provided an application is made to the tribunal for levy of such amount within a period of 3 months from the date on which it becomes due. इसका मतलब ये हुआ कि अगर एप्लीकेशन नहीं दी गई तो ट्रिब्यूनल वारंट इशू नहीं करेगा और ना ही कोई इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर पास करेगा. मैक्सिमम मेंटेनेंस अलाउंस सेक्शन रूल 15 में भी 10,000 रुपीज़ कर दिया गया है. इसका ये मतलब हुआ कि ट्रिब्यूनल ऑल्दो कंसिडर करेगी कि कितनी ज़रूरत है उसको, अपोजिट पार्टी की इनकम क्या है, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, मगर उसके बावजूद भी मेंटेनेंस अलाउंस 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं अलाउ करेगी. रूल्स में, उत्तर प्रदेश रूल्स में स्कीम फॉर मैनेजमेंट ऑफ ओल्ड एज होम्स एलाबोरेट की गई है. ओल्ड एज होम्स फॉर इंडिजेंट पर्सन्स, उनसे एप्लीकेशन इनवाइट की जाएगी. कम से कम साल में एक बार ये एप्लीकेशन ओपन होगी जहाँ पे इंडिजेंट सीनियर सिटीजन्स, यानी जो गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं है अपने को मेंटेन करने के लिए, वो एप्लीकेशन मूव करेंगे. अगर एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई और ओल्ड एज होम की कैपेसिटी कम है
तो कैसे सिलेक्शन होगा इनका? हम अपने टॉपिक जो था सीनियर सिटीजन एंड पेरेंट का मेंटेनेंस, अब हम उससे थोड़ा हट करके डेविएट करके इस पॉइंट पे आ गए हैं कि ओल्ड एज होम्स में किस तरह के सीनियर सिटीजन्स एंटाइटल्ड होंगे और ओल्ड एज होम्स का रखरखाव कैसे होगा, उसके लिए फंड कहाँ से आएगा। बहुत डिटेल में जाने के बजाय सिर्फ इतना कह सकते हैं इसमें कि अगर ओल्ड एज होम्स की कैपेसिटी लिमिटेड है और एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई हैं तो 3 तरीके दिए गए हैं इसमें कि इस आधार पर चूज़ किया जाएगा कि किसको ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि जो ज़्यादा ही गरीब है ऐसा सीनियर सिटीजन, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। जो ज़्यादा ही बुज़ुर्ग है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, और फीमेल एप्लीकेंट्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा ओवर मेल एप्लीकेंट्स। कास्ट एंड रिलीजन के बेसिस पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं मेंटेन किया जाएगा। आदमी और औरत के लिए सेपरेट लॉजिंग दी जाएगी। हाँ, वो साथ रह सकते हैं जो कि ब्लड रिलेटेड हैं या मैरिड कपल है। स्टेट गवर्नमेंट एक डिटेल गाइडलाइंस इशू करेगी और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में कमेटी भी फॉर्म करेगी to ensure life and property of senior citizens of the district are protected and they are able to live with security and dignity. Now, the district magistrate has an empowered section. Rule 21 is important. At some point of time, the petitions came before the High Court that necessary direction may be issued for the district magistrate to look into the applications. Then a research was made. It was found that U.P.Rules 2014 provides that there are duties and power of the district magistrate, and the district magistrate shall perform the duties and exercise the powers mentioned in sub-rule 2 and 3 so as to ensure that the provisions of the act are properly carried out in the district. So, आपको याद होगा कि एक्ट टू सीनियर सिटीजन्स एक्ट के चैप्टर 5 में जहाँ पे सीनियर सिटीजन की लाइफ एंड प्रॉपर्टी मेंटेन के प्रोटेक्शन की बात कही गई है, उसमें इसके प्रोविज़न देने के बजाय, उससे रिलेटेड प्रोविज़न देने के बजाय उस सेक्शन में वाइडर पब्लिसिटी की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दी गई थी कि वो प्रॉपर्ली एडवर्टाइज करें, पब्लिसाइज करें उस एक्ट के प्रोविजंस को। मगर किस अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन जाएगी सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसा उस एक्ट में चैप्टर 5 में नहीं दिया गया था। मीन्स की एक्ट 2007 इज साइलेंट। इसको कंप्लीमेंट करता है, सप्लीमेंट करता है ये आपका यूपी रूल्स 2014। रूल 21 क्लियरली सेज दैट कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पावर होगी देखने के लिए, और इनकेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने काम को, अपनी ड्यूटीज़ को सही ढंग से निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, देन सम पिटिशंस may be filed before the High Court. Although it is on the discretion of the High Court to entertain such petitions or not to entertain, because High Court says that the High Court is not an enforcement agency. Duty of the district magistrate, then district magistrate should look into his powers and duties. But if district magistrate does not do his job and does not look into the matter of a senior citizen, where he will go? Of course, he would make an approach before the Honorable High Court under Article 226, and such petitions being having a purpose of welfare of senior citizens are entertained and not rejected outrightly. Unnecessary directions is in most of the cases issued by the High Court to the district magistrate to comply with the orders and comply with the provisions of the Rule 21, which says that it shall be duty of the district magistrate to ensure that life and property of senior citizens, again take care of. The point is that not only the life but property of senior citizens of the district
are protected and they are able to live with security and dignity. Here, the property valuation has not been given. Here, senior citizen has to be senior citizen, not indigent senior citizen. If he has got any property, which means he can approach district magistrate for the protection of the property. It opens an entirely new chapter. It appears that for protection of property, civil court, but since the jurisdiction of civil court has been barred, it means a new way is open for the senior citizen to approach the district magistrate for protection of his life and property. The district magistrate is to oversee and monitor the work of maintenance tribunals, application for maintenance and execution of tribunal order, monitor the working of old age homes, also to ensure a wide publicity of the provisions of the Act, resources and efforts to be effectively pooled for the welfare of senior citizens of the district, sensitization of officers, review the progress of investigation and trial of cases relating to senior citizens in the district. वृद्ध एंड बुजुर्ग रहते हैं, उनके खिलाफ बहुत सारे ऑफेंसेस भी हो जाते, उन सबको क्विक डिस्पोजल और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. Rule 22 says that action plan for the protection of life and property of senior citizen. Here, the police officers, that is district superintendent of police, have been authorized, and they are duty bound to protect the life and property of senior citizens. Each police station shall maintain up-to-date list of senior citizens. ये सब rights हैं senior citizens के, सभी senior citizens को जानना आवश्यक है. A representative of police station with a social worker or volunteer shall visit such senior citizens at regular intervals of at least once in a month. Complaints and problems of senior citizens shall be promptly attended to by the local police. Police is duty bound, and senior citizen को ये जानना ज़रूरी है कि उनकी complaints उनको कहाँ फाइल करनी है. लाइफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाना है, ठीक है. और पुलिस स्टेशन से सोशल वर्कर के साथ एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पुलिस स्टेशन उनके यहाँ विजिट करने के लिए बाउंड है एटलीस्ट हर महीने, ठीक है. अगर नहीं हो रहा है तो जिस सीनियर सिटीजन को ज़रूरत है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता है कि ही नीड्स अ रेगुलर विजिट सिंस ही इज लिविंग अलोन अनअटेंडेड. अगर ऐसे किसी सीनियर सिटीजन को कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको भी प्रॉम्प्टली अटेंड करना है लोकल पुलिस को. ये सीनियर सिटीजन को जानना ज़रूरी है, तभी तो पुलिस को अप्रोच करेगा और उनको रिमाइंड कराएगा कि ये आपकी ड्यूटीज़ हैं रूल 22 में, कृपया मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिए, मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, उनको अटेंड कीजिए मेरी प्रॉब्लम्स को, और मेरी कंप्लेंट्स को अटेंड कीजिए. वॉलंटियर कमेटी सभी पुलिस स्टेशन पर फॉर्म की जाएंगी जो रेगुलर कॉन्टैक्ट मेंटेन करेंगे, खासकर उन सीनियर सिटीजन के साथ जो बाय देमसेल्व्स रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है. ये सारे प्रोविज़न का पब्लिसिटी भी प्रोवाइड की जाएगी. भाई पब्लिसिटी की आवश्यकता बार बार इसमें इस एक्ट में रूल्स में दोहराई जा रही है, वो सिर्फ इसलिए ना कि सीनियर सिटीजन को अभी अपने बहुत सारे अधिकारों के बारे में जानकारी ही नहीं है. 2007 में ये एक्ट बनता है, 2014 में रूल्स बनते हैं. सीनियर सिटीजन्स 70 अबव 60, कोई 70 के हैं, 75 के हैं, 80 के हैं, बहुत सारे पढ़ सकते हैं, बहुत सारे नहीं भी पढ़ सकते. बहुत सारे लोगों को लॉ में इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, उनको कौन बताए अगर वो अकेले रह रहे हैं. तो इसलिए ये स्टेट एंड सेंटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, मेनली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर, कि वो इस ढंग से पब्लिसाइज करें सोशल वर्कर्स के थ्रू कि सभी सीनियर सिटीजन जो जहाँ रह रहे हैं उनकी पूरी लिस्ट तैयार करें और उनको उनके अधिकारों के बारे में बताएं. उनके साथ काम करने वाले डोमेस्टिक सर्वेंट्स के एंटीसीडेंट्स को भी वेरीफाई करें. सीनियर सिटीजन्स को बताएं कि डूज एंड डोंट्स क्या हैं उनके लिए. सीनियर सिटीजन्स के खिलाफ जो क्राइम्स होते हैं उनको हैंडल करें. स्टेट काउंसिल तैयार करेगी सीनियर सिटीजन्स की. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कमेटी तैयार होगी सीनियर सिटीजन्स की देखभाल करने के लिए. डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस सुपरिटेंडेंट, सिविल सर्जन
चीफ मेडिकल ऑफिसर, social workers, one representative of pensioners association, two representatives of voluntary organizations nominated by the district magistrate, assistant director social security, ये members होंगे और at least once in every 3 months ये district committee meet करेगी और district committee will review the following activities relating to the implementation of the act, including review of administration and management of old age homes, support programs, ensure linkage between different agencies working in the field of senior citizens welfare, review the functions of tribunals set up in the district under the act. हाँ, इस एक्ट में ये भी प्रोविज़न है कि एटलीस्ट एक ट्रिब्यूनल हर जिले में ज़रूर होना चाहिए, मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल, और सब डिवीजनल ऑफिसर हेड करता है, प्रिसाइड करता है मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल को। शेड्यूल, फिजिकल फैसिलिटीज़, ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स, ये ओल्ड एज होम्स के बारे में बताए गए हैं, इसलिए यहाँ पे इनको डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे भी सिविल कोड का जुरिसडिक्शन पार किया गया है। इसके बाद वो सारे एप्लीकेशन एंड फॉर्म्स दिए गए हैं एक्ट में, जिनके तहत जिन पे अप्लाई करना है। इनसे संबंधित सम गवर्नमेंट ऑर्डर्स भी इशू हो चुके हैं 2015 में, जो ये कहता है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 एवं उत्तर प्रदेश माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियमावली 2014 के अंतर्गत प्रदेश में वृद्धाश्रम संचालन हेतु दिशा निर्देश कार्य पद्धति। सो ओल्ड एज होम्स के लिए गाइडलाइंस के लिए गवर्नमेंट ऑर्डर इशू हो चुका है, ये 26 फरवरी 2015 का है। और दूसरा, उत्तर प्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक नीति भी स्टेट गवर्नमेंट ने 21 मार्च 2016 में डिक्लेयर कर दी है। ये एक्ट अपने आप में एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड बृहद एक्ट है। अभी तक सीनियर सिटीजन्स एंड पेरेंट्स की सुविधाओं के लिए प्रोविजंस स्ट्रे फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड चैप्टर 5 में दिए गए थे, लेकिन अब उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ इनैक्ट किया जा चुका है, जिसके तहत बहुत सारे राइट्स सीनियर सिटीजन्स के लिए और पेरेंट्स के लिए बना दिए गए हैं, जिनको जानना भी ज़रूरी है इन पेरेंट्स के द्वारा और सीनियर सिटीजन्स के द्वारा, जिस इस एक्ट एंड रूल्स के तहत ये इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। किनको अप्रोच करना है, एसडीओ को मेंटेनेंस के लिए, उसके ऑर्डर के खिलाफ अपील करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, सीनियर सिटीजन अपनी लाइफ एंड प्रॉपर्टी के लिए प्रोटेक्शन सीख कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स एंड पुलिस ऑफिसर से। ये सभी चीज़ें इसमें ब्रीफ कर दी गई हैं। हम लोग सीनियर सिटीजन्स या तो हैं या आने वाले समय में सीनियर सिटीजन कहलाएंगे। ये डिस्कशन इसी उद्देश्य से है कि वो जागरूक हो सकें। धन्यवाद।